Namaskar, great morning, Sat Sri Akal, Adab, Assalamu alaikum, Vanakkam, everybody. वेलकम टू डे नंबर 18। अभी इसका मतलब है 7 ही दिन बाकी है, इस हफ्ते का 2 दिन और अगले हफ्ते का 5 दिन। वी आर एंटरिंग इनटू अ क्रूशियल स्टेज जहां पर आप लोगों को जाकर मिलना है, एजेंट बनाना है। और मैं आज बॉम्बे में नहीं हूँ, पूना में हूँ। और पूना में आया हूँ कि आप लोगों को ये नहीं लगे कि सिर्फ बॉम्बे में ही रिक्रूट कर सकते हैं और कहीं रिक्रूट नहीं कर सकते हैं। तो मैं पूना में आके मिला एंड विथ मी इज किरण लाटकर, मिस्टर किरण लाटकर, एसबीआई डीओपी, एक जमाने का पीडीओ एंड वेरी वेरी डायनामिक पर्सनालिटी। एंड हमारे प्रोग्राम रेगुलरली अटेंड करते रहते हैं। तो हमने उनको बोला कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग यहाँ पर करें। तो किरण वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड एंड आज किरण साहब की तरफ से एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ हमने अपॉइंटमेंट फिक्स किया हुआ है। और वो अपॉइंटमेंट करीबन 8 बजे है। आपको मेरी आवाज सुनाई दे रहा है तो जरा थम्स अप करेंगे प्लीज। ओके, तो थैंक यू सो मच। आप दिखाई नहीं दे रहे हो मगर अभिषेक मेरे को थम्स अप करके दिखा दिया। नाउ हम लोग पुणे की एक कॉमर्स जोन बोल के जगह पर गए थे। वहां पर बहुत सारे लोगों से बात किया और मतलब 7:30 बजे से लेके अभी तक ढूंढ रहे हैं कि कोई भी एक ऐसा आदमी मिल सकता है जिसके साथ हम ये आइडिया शेयर कर सकते हैं। तो कॉमर्स जोन में सब लोग बाहर के कैंटीन में आए थे। सब लोग 2 मिनट के लिए चाय पीने के लिए, सिगरेट पीने के लिए आए थे। 15 मिनट किसी के पास नहीं था। तो वहां से हम लोग ये चार्टेड अकाउंटेंट को मिलने का रास्ते पे हम लोग आ रहे हैं। उस तरफ दिखा सकते हो, ये जो है यहाँ पर एक नाश्ता कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं वहां पर सामने। बाद में ये अंदर चले गए। वापस आने के बाद उनसे हम लोग बात करते हैं एंड होपफुली कि वो हमको अपॉइंटमेंट दे देंगे। एंड राइट, तो कोल्ड कॉल करते रहने का है। कोल्ड कॉल करके लोगों को मिलने के, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ना करेगा। ना किया तो आपका आधा मिनट खत्म हुआ, मगर हाँ बोल दिया तो आपके पास एक जबरदस्त एमडीआईटी एजेंट बन जाएगा। 3-4 लोग हैं यहाँ पर, तो कोशिश करते हैं। सर नमस्कार, मेरा नाम राजेश टैगोर है and I work for the Life Insurance Corporation of India as a development officer. So we have something called the MDIT agency. This is an information thing. Showing this requires exactly 15 minutes. I can show you? Okay, so before that, can I? Yeah. Just a small formality in terms of I would like to write down your name and small few dreams of yours. Is that okay? What's your name, sir? Madhav. Madhav. Space RB. R. Before Bombay. So this is actually getting live indeed. So that cameraman is there. Madhav. Is he there? No, you need not see that. We can be comfortable here. He is Kiran Latkar. And my name is Rajesh Tagore. So Mr. Madhav RV, today we are on the 18th. 18th of May. No, 1st of June. 18th session. Okay, sorry. 1st of June 2023. Now the time is 7:35, almost 7:33 indeed. And your mobile number is, Madhav sir? My mobile number is 97550. What do you do currently, Mr. Madhav? I'm a private job professional. Senior manager in company. Company name is not required here. Okay. Quickly coming to the subject, what would be your dream car? Dream car? Yeah. Yes, Audi. Which one do you drive now? Polo. Volkswagen. Oh. That's a very good car. 3 international vacations that you would like to travel with your family. Paris. Hawaii. Hawaii is in US, is it? It's a part of US, it's a different country altogether. I don't know. Let it be. Okay. Is this required? Yeah, I'm just formality, that's it. Not required. Yeah. Next is going for any other nearby destination like Bhutan or Malaysia. Where is your dream house? How big is it? And how much would it cost?
Mr. Madhav's dream house. Dream house. Yeah. Dream house is at Bhilai, my hometown. You are from MP Chhattisgarh, is it? Chhattisgarh. And how big is it? It's 4 BHK. How much would it cost? Completely Furnished. it's completely not at the apartment kind of. So, Raw house, independent house. And how much would it cost? it costs at, At Bhilai? at that Bhilai, it is costs around 70, 70, 70, 70 Lakhs. 60. Yeah. What would be Mr. Madhav's dream monthly income? How much, if you earn, you feel that, yeah, this is what, worthwhile. Madhav's This should be more than 10 12 per month. And what would be Mr. Madhav's dream pension? Whenever you retire, how much money you should be? Approximately half of this. Okay, so that's all I wanted to ask in terms of interview. So I'm doing this interview with Mr. Madhav RB 97555 and 550928823, 1st June 2023, 7:35. He's working in a private company as a senior manager. Dream car is Audi and now he's driving Polo. Paris and Hawaii and Bhutan or Malaysia or Singapore, etc. I mean, these are the dream international vacation that you would like to try. Bhilai is your hometown. That's where you would like to build a 4 BHK home, which is independent, which is not in an apartment, which might cost somewhere around 70 lakhs. That's your dream home. And 10 to 12 lakhs is what you should be reaching very soon in terms of monthly income. And 6 to 7 lakhs. This is Your dream income. Yeah, yeah. So someday, if you feel that you should be reaching this level of getting income, and 6 to 7 lakhs should be the pension. Am I understanding you correctly? So this is the first part of it. In order to fulfill these dreams, I'm from LIC, Life Insurance Corporation of India. LIC has come up with this new agency called MDRT agency. The full form of MDRT is $1 Million Roundtable. It's a USA-based organization which is affiliated to somewhere around 500 plus insurance companies worldwide. So all these companies have the top performers. They are called the MDRT agents. So LIC has started this. So this is that information I'm talking about. There are totally 64 benefits people who take up this agency get. I'm showing you the first 6. The first benefit, Mr. Madhav, is MDRT agency offers you 1 lakh rupee first year commission. That means you start earning around, 12 lakh rupee first year commission. That means you start earning around 1 lakh from the very first month itself. In LIC, there are 4 kinds of agents, Mr. Madhav. First is a normal agent who earns around 17,000 monthly and 2 lakhs annually. Second is a MDRT agent who earns around 1 lakh and 12 lakhs annually. This is minimum I'm talking about. Then COT and the TOT agent is the guy who earns minimum 6 lakhs monthly and 72 lakhs annually. So this is the first benefit, Mr. Madhav. The second benefit is MDRT agency offers an opportunity to visit USA every year for the convention. That means your dreams of traveling to different countries like Paris, Hawaii, and Malaysia, Bhutan, all these things can be accomplished here. At the MDRT level, you would be in a position to travel alone. At a TOT agency level, you would be traveling with your spouse. This is benefit number 2. Third benefit, Mr. Madhav, is MDRT agency offers something called renewal commission. Now, this is an important terminology to remember, renewal commission. This is like a pension in itself. So before I proceed, when do you think people get pension? After 58. After 58, 60, after retirement of 30, 40 years of service. In this agency, you start receiving that pension, which is called renewal commission, from the second year on. 1 year completed, every month at MDRT, you receive 15,000 monthly for life. After 2 years, it becomes 30,000 monthly. Okay. After 5 years, it becomes 75,000 monthly. After 10 years, you receive 1.5 lakhs every month, whether you work or not. This is pension. Similarly, after 30 years, this is the third benefit. Okay. Mr. Madhav, the fourth benefit is MDRT agency offers something called hereditary commission.
Now, hereditary commission is, let us say you worked for only 10 years. That means you're eligible for 1.5 lakhs of monthly pension for life. This would come to you. After you, your spouse would receive this money, Mr. Mother, every month. And after your spouse, your children would receive. And after your children, your nominee would receive that. So this keeps on continuously coming to you. This is the fourth one. The fifth benefit is MDIT agency offers you chance to purchase your dream car. I think you mentioned about Audi. So that you will be in a position to purchase within after 1 year. And the sixth benefit is it offers you an opportunity to purchase your dream home. So you can purchase your dream home that of Bhilai with 1 crore rupees. Okay. So these are the 6 primary benefits of this agency. Okay. So I just thought I will talk to you and I will show this opportunity to you and ask you, why don't you consider taking up this? Why don't you consider taking up this MDRT agency, becoming an MDRT agent? What is to be done for that? Very good question. So your question is, if I take up this agency, what do I have to do? What is going to be my job? Thank you, Mr. Madhav. So this is the question. What is my job? After taking up agency, there will be 4 phases in life. In every phase, the job would be different. For example, phase 1 is called the initial success period. So which is the first 18 months. So today is 1st of June. By the time, we get started and complete the formalities, it might take 15 days. So 15th of June to 15th of December 2024 is the phase 1. During that period, your job is to show the lifestyle presentation to 10 people every day, 200 people every month. Now, what is a lifestyle presentation? A lifestyle presentation is a presentation which is this. So this speaks about 6 different kinds of lifestyles. And this is an education material. And when you show this material to people, right, they immediately show willingness to buy insurance policies. And they buy insurance policies to the optimum. So what we are going to do is we are going to provide you this. We are also going to give you education about how to present this. We will also be teaching about whom to present this. So your job is to show this to 10 people a day and 200 people a day. So this is going to be your job in the first phase. In phase 2, the job would change a bit. This will be the job after 18 months. In phase 3, the job would change a little bit more. And in phase 4, the job would change. How do you feel about the whole idea? It is absolutely designed and completely, compiled in a way to serve in the right way to your absolutely teammates and your to whom you meet to penetrate mainly interest and idea as well. Thank you so much. I just wanted to show this to you also that there are 2 important questions. Actually, 3 questions people ask. The first one you already asked me. What is going to be the job? The other 2 questions people normally ask is it going to be easy or difficult to succeed in this career? I know that it's not so easy, and even though not so difficult as well. It is up to that how much you are going to be, chase and keep touch with the people. Then only you can, induce your idea to them. Otherwise, it's going to be, just high by kind of. Very, 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 very well said. And that's why, you are a senior manager in a company. But, I have a different way of putting the same thing that you said. This is the, the MDIT COT PUT agent list. So, as I said, LIC has 4 kinds of agents: normal, MDIT COT PUT. We are not mentioning about normal MDIT COT PUT list. We are showing this to you. Now, if I show this to you, these are the all India all-time great agents of LIC. There's a guy called Bharat Parekh from Nagpur. He earns around 8 crores every year. There's a guy called P. Srinivasan from Coimbatore. He earns around 12 crores every year. And all these guys are different people from different places who are earning more than 2, 3, 4, 5 crores kind of things. Nobody is in Pune. Pune, there was a... This year, there was 2 people. This year, this belongs to 2 years back. So this list gets, ये लिस्ट में से अभी जो है मेरे हिसाब से ये जो है ये गोवा का है, ये नागपुर का है, ये पुणे के बाजू का है, परभणी है ना ये? Yeah, that's not Pune. So in this list, this list gets updated every year.
Pune, Ashwini Dushan. तो ये अगर देखेंगे आप, all these guys are MDRT agents. So this is the serial number. I believe that she must be with you. No. So I'm just showing this to you. She must be with you to make other people convinced. No. So this is the actual list of, you can see, this is actual All India MDRT ranking list of LIC of India. I understood. Yeah. To get a new guy into the team, yeah, you must have a person who is able to tell their success story to them, to make them realize it, right? You understood what I want to say? Yeah. So, you are possibly thinking from the network marketing point of view. No, that's I'm not. No, that's where people come and. It's about that. If you're showcasing a photo, I don't know who is going to do it. I don't know. Okay. So this guy is from Bombay. This guy is right. Just telling you. Yeah. It's a newspaper for me. Right. Absolutely. Yeah. So let me just show this to you. So these are the MDRT agents list of LIC. So all these are MDRT agents who are earning more than 12 lakhs every year, who are earning the renewal commission, who are earning the hereditary commission, who are earning going to USA every year. All these guys. So they are from Pune, they are from Bombay, they are from Nashik, every different part of India. So these are the guys who are in a position to buy their dream car, dream home, USA tour, 12 lakhs, renewal commission, hereditary commission, and just the list is, total list is, you can see how many? 16,511. Okay. So these are the number of, out of 12 lakh agents. No, out of 12 lakhs. 140 crores. Yeah, that is the population. India's population. Yeah, 12 lakh are agents. But LIC is having a workforce of 12 lakh agents. Out of which these are the MDR. So they are targeting how many people per person? अगर 140 करोड़ की जनसंख्या है, आपके 12 लाख के जो LIC generally do वो kit लाना जरा. Yeah. So what you're asking is, अगर मैं समझा, I'm asking the opportunity. Yeah. तो मैं आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में कितनी है वो मैं देख आप देखो. हाँ, मैं आपको वो फैक्ट्स दिखाते हैं ना, तो कैलकुलेटर निकालिए. 1 करोड़ 40 लाख डिवाइडेड बाय 12. 1 करोड़ 40 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख. 1 करोड़ 40 लाख भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें 100 करोड़ भी 80 करोड़ मान लीजिए. हाँ जी, 80 करोड़ डिवाइडेड बाय, हाँ, उसमें से खास तबके के लोग हैं वो तो LIC की तरफ देखते भी नहीं है, तो उनको भी 24 other companies actually. 24 other companies which are private companies. वो 10-20 करोड़ को अलग कर लो. हाँ, तो 50 करोड़ ही पकड़ लीजिए. 50 करोड़ डिवाइडेड बाय 12 lakhs is somewhere around 4,000 people to 400 people. If I divide 80 lakhs, 80 crore by 12 lakhs, 66. The answer is 66. 66? Yeah. Only 66. Yeah. नहीं तो 66,000 होगा. 12 लाख एजेंट कर दो ना. 660. एक आदमी का penetration. एजेंट के लिए 600 opportunities. Yes. 600 opportunities. Out of 600 opportunities, what is the percentage conversion ratio? कितना है? मतलब आपका तो experience हो. So conversion ratio, if you look at these guys, these guys just generally. तो 12 लाख में अगर देखा जाए तो पर पर्सन 600 अपॉर्चुनिटीज बताएं. तो एक पर्सन के पीछे 600 अपॉर्चुनिटीज. तो 600 में से कन्वर्जन रेशियो क्या है? 12%. 2%. This is normal average. ठीक है. 600 का 12% कितना? 2% ही. 600 का 10% 60 होता है. 2%. 1% is 6. Yeah. And 12. 2%. तो 12 लोगों में अगर मान लो सबसे टॉप ग्रेड के लोगों ने नहीं, यहाँ पर एक छोटा सा करेक्शन दूंगा. अगर 12 के 12 आपके सबसे हाईएस्ट प्रीमियम वाले भी ले लिए. 12 ही पॉलिसी आपके सोल्ड आउट हुए इस साल. 1%. तो हाउ यू विल गेट दिस टारगेट अचीव्ड? राइट, यू गेटिंग माय पॉइंट. राइट, आई गॉट योर पॉइंट. उसको बाजू वाले का टारगेट छीनना पड़ेगा. मैं सब आइडियल कंडीशंस में बात कर रहा हूँ. बढ़िया बात कर रहे हैं, एकदम बात कर रहे हैं. तो आप जो बात करें उसी का मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ. इसीलिए ये 4 प्रकार के एजेंट में चला जाता हूँ. नहीं, बढ़िया कर रहे हैं आप, बढ़िया कर रहे हैं.
इसलिए ना 4 प्रकार के एजेंट है। ये जो है 98% ये कुछ काम के नहीं। ये जो है दिस पीपल्स एवरेज इज अप्रोक्सीमेटली 200 policies MDRT तो एजेंट। आपका कहने का मतलब है कि ये इनका रेशियो 2% से ऊपर है। इनका रेशियो अंदर अराउंड 10%। तो 60 लोग हैं। हाँ जी, तो 60 की जगह ज्यादा मिलते हैं, ये कम मिलते हैं, वैसा होता है। एंड नंबर 2, ये एक चीज देख सकते हैं, 90% ऑफ इंडियन आर नॉट एडिक्वेटली इंश्योर्ड। नाउ दिस इज क्या बोलते हैं, द स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द क्या बोलते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड। गड़बड़ है एक्चुअली। अभी ये जो हमारे प्रधानमंत्री बीमा ग्राम बीमा, नो देयरफॉर वी आर एडिंग दिस वर्ड कॉल्ड एडिक्वेट। क्योंकि वो जब पेनिट्रेट हुआ 12 रुपीज और बराबर है, प्रधानमंत्री बीमा योजना। So due to that, more than 20% people are connected. इंश्योर। यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं, एडिक्वेटली की बात कर रहे हैं। एडिक्वेटली मैं जरा डिफाइन करता हूँ, एक मिनट। तो यहाँ जो है the number of people in this middle class category 5 to 20 lakhs in 95-96 में 46 lakhs थे माधव सर, एंड 2001-2 में इतने थे, 2019-20 में 6.5 करोड़ इंडियंस। साथ में अपन वो क्या बोलते हैं उसको, इन्फ्लेशन रेट भी ऐड करना पड़ेगा। हाँ, इस रेट पे पहुंचे वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन मिस्टर माधव। खर्चे भी उतने ही बढ़ गए ना। राइट। सोने का कीमत इस टाइम में हाँ जी 4000 रुपीज था। राइट। यहाँ से यहाँ भी हम कंपेयर करेंगे, अगर अभी 1920 या 23 में है हम लोग, तो कुछ सोना हो गया। तो नीड टू अभी यहाँ पर इस पर पर्सन जो बता रहे हैं, राइट, मतलब इस ग्रुप में है, राइट, इनकम ग्रुप में, राइट, इतने लोग, हाँ, डेफिनेटली इक्वली उनका जो उसको क्या बोलते हैं, परचेस पावर, हाँ, परचेस पावर पैरिटी, इक्वली ज्यादा डिफरेंस नहीं है परचेस पावर। राइट, ये हो सकता है। भी आप 10 ग्राम सोना खरीद नहीं सकते थे, यहाँ पे भी नहीं खरीद सकते। वेरी वेल प्रेजेंटेड। मैं आपको वही फैक्ट बता रहा हूँ, मतलब इट्स नॉट लाइक दैट। आज से यहाँ पर अगर शायद देखेंगे अचानक देयर इज ए बूम इन द इकोनॉमी, डेफिनेटली बूम वाज देयर, नाउ इट इज हैपनिंग। देखिए मेरे इस ड्यूरेशन, कौन सा ड्यूरेशन में, ये 2009-10 इसके बीच का ड्यूरेशन कहाँ गया? इसके बीच का नहीं है, तो अभी मतलब यही जो स्टैटिस्टिक्स आया वही लाए हैं। नहीं, इसके बीच का ड्यूरेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, हाँ, 2015-16 11 से लेके 18 के बीच का जो ड्यूरेशन था वो अलग, ठीक है। ये 2011 में समझो 3 करोड़ थे, 2020 में हो गए 6.5 करोड़। इसके बीच का डेटा इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल कनेक्टिंग रखा है सब जगह। हाँ, यहाँ के बीच का भी डेटा गायब है, हाँ, इसके भी बीच का डेटा गायब है, राइट, समझो या तो मैंने मेरा पोलो 10 साल पहले लिया था, हाँ, ठीक है, दैट वाज 7 lakhs। नाउ equivalent to polo, whatever the vehicle if you want to buy, it goes around 14 to 15 lakhs, ठीक है। so it got little double, not exactly, little double to the total, और आप बोल रहे हैं तो इक्वली इनकम भी बढ़ा है, तो डेफिनेटली दैट इज कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर। भाई उतना ही यहाँ पर शायद ज्यादा बढ़ रहा है ये 10 साल में। देयर इज ए 5% ग्रोथ, 5-fold ग्रोथ, ऐसा बोलते हैं। ये फिगर नहीं, ये फिगर जो है मेरा नहीं है, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स। कांग्रेस के किसी पर्सन से पूछिए कितने लोग बेरोजगार हैं, और हम लोग डेलीगेट कर रहे हैं मोदी जी को, दे हैव डेटा, वी मस्ट गेट द डेटा फ्रॉम। तो गलत है, आपको डेटा दिखा रहे हैं। तो मैं इसको और एक तरीके से पेश करता हूँ। ये जो एडिक्वेट में आपने बढ़िया चीज पकड़ा है, द डेफिनेशन ऑफ एडिक्वेट इंश्योरेंस, उसको जरा हम डिफाइन करते हैं। तो देयर इज ए प्रिंसिपल कॉल्ड ELV। हाँ जी, 15 मिनट से ऊपर हो, तो shall we close this interview here itself? Yeah, मतलब just you, it's okay. I mean, I thought you are such an intelligent and intellectual person giving such a beautiful data. So I thought, why not complete this? I'm just talking on your But, data. but yeah. So just to speak out here, ELV is economic life value, which is MI into 200. एक person का insurance इतना होना चाहिए, MI into 200. MI into 200 क्यों होना चाहिए कि monthly income into 200 क्यों होना चाहिए कि आज समझो आपका income, just giving an example, वही ELV, economic life value, इसका फॉर्मूला है मंथली इनकम इंटू 200। यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है कि 50 अगर आपको मंथली इनकम है तो आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए 1 करोड़। 1 करोड़ का क्यों होना चाहिए कि MI 50,000 into 200 is equal to 1 करोड़।
आपको कुछ हो गया तो मैडम आपके मिसेज जो है 1 करोड़ बैंक में रख देगी, 6% इंटरेस्ट के हिसाब से सालाना 6 लाख मिलेगा, यानी महीने के 50,000 आता है। Therefore, हर आदमी को मंथली इनकम का 200 गुना इंश्योरेंस होना चाहिए। The other fact is 90%, 99% लोग ये प्रीमियम वैल्यू होगा कि नहीं, इंश्योरेंस तो ये तरीके से अगर देखेंगे, इट्स अगेन 98% पीपल आर नॉट एडिक्वेटली इंश्योर्ड, और आप उस गैप को फुलफिल कर सकते हैं। okay 90% people आर नॉट एडिक्वेटली insured but not aligned with this policy. तो ये जो हम लोग लाइफस्टाइल प्रेजेंटेशन वगैरह दिखाते हैं, मोस्ट पीपल शो देयर इंटरेस्ट एंड कीननेस टुवर्ड्स टेकिंग अप एजेंसी एडवाइस। तो ये आइडिया था, व्हाई डोंट यू टेक अप दिस? Yeah, I would definitely prefer, but I will think of it sometime. That if I face that much of time, first of all, because I need to justify that what I'm taking, because it is not going to be, wise decision until unless you do it. Not professionally, you can say that honestly. Right. Professionally, everybody take दे दो मतलब, but if you are not, Committed and yeah. Committed also, committed different thing. Saying that much of time is right. टाइम रहते हुए भी नहीं कर रहा, दैट मींस इज नॉट कमिटेड, बट टाइम ही नहीं दे पा रहा तो कमिटमेंट के बाद ही सेकेंडरी होता है। एक लास्ट एंड फाइनल चीज बताकर मैं निकल जाता हूँ टाइम के बारे में। तो बिजनेसमैन कैटेगरी में एक चीज था, there are several options that you have as far as time is concerned. इस एजेंसी का खास बात है, so there are options like you can invest 1 hour a day, 2 hour a day, 3 hours a day, 4 hours a day, 8 hours. तो ये रिसर्च बोलता है 1 hour a day अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, after a month you are receiving around 15,000 monthly income. After solved data, I agree with you. Solved data based on the best efforts. It's not about that. No, this is normal average efforts हमारे ट्रेनिंग के best efforts मतलब एक ही घंटा सर, महीने का 15 घंटा काम करते, 30 घंटा काम करते हैं तो इतना आता ही। अंडरस्टैंड, ये सब रियल फैक्ट्स। आप 2 घंटा काम करोगे तो इतना आता ही। काम हम डिफाइन कर देंगे, किताब दिखाना है बस ये जो है। अब 3 घंटा मतलब 4 घंटा काम करेंगे तो इतना मिलता है। तो आप जो है टाइम के कंस्ट्रेंट में यू कैन डिसाइड कि 1 hour एवरी डे आई कैन इन्वेस्ट और 2 hours एवरी डे, यू कैन डिसाइड दैट। एंड एक्चुअली इफ फिगर्स आने लगा देन यू कैन कन्वर्ट योरसेल्फ इनटू, आप समझो अप्रोक्सीमेट मंथली इनकम इतना कमा रहे हैं, 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। जिस दिन आपका इससे ज्यादा आने लगेगा यू कैन कंसिडर बिकमिंग ए फुल टाइम। आपका कार्ड दे दिया आपने? हाँ जी। सो आई वुड लाइक यू टू कंसिडर दिस एंड आप मेरे को रिवर्ट बैक करिए इस नंबर डिस्कस करते हैं। बस मेरा नाम यस तो ठीक है, नंबर आप कहीं फ्लोट मत कीजिए, बिकॉज ये लाइव आप बता रहे हैं, जस्ट ब्लर इट। व्हाई? बिकॉज ऑफ नंबर इज अ डेटा। या यू कैन डू दैट, म्यूट कर लेंगे। हाँ दैट सिर्फ मेरे पास रहेगा। नहीं वहां पर चला गया, ही वाज वरीड अबाउट दैट। म्यूट करेंगे। आई एम नॉट वरीइंग एक्चुअली, मेरे पास नो वी विल म्यूट इट। ठीक है, बिकॉज नाउअडेज दैट इज अ डेटा, राइट। अच्छा इट्स ओके, इट्स ऑलरेडी म्यूटेड बोल रहा है। ओके, वो उन्होंने म्यूट को दबा दिया था तो वो आया ही नहीं। ठीक है। थैंक यू सो मच मिस्टर माधव, एंड you have his number and you can revert back. What is called? Oh. Yeah, Kiran Lakhar. एक ये है। थैंक यू सो मच माधव। ये एक पकड़ना है, ये एक पकड़ना है। Guys, that was an interview. इस तरफ दिखा सकते हो, इस तरफ दिखाओ। माधव जो है जा रहे हैं एंड रास्ते में मिले, हमसे बात किया, अपॉर्चुनिटी लिया। एजेंट बनेंगे नहीं बनेंगे सेकेंडरी, बाय द एंड ऑफ इट वो जाते जाते आपने अगर देखा, देयर इज समथिंग कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। 3 बार हैंडशेक किया, कार्ड को ढूंढा। दीज आर इंडिकेटर्स कि वो सही कर सकते हैं, मगर वो किसी कंपनी में इतना बिजी है, इतना ऑक्यूपाइड है, तो शायद वो पैसे मतलब टाइम के बारे में वरीड है। तो लास्ट में हमने टाइम वाला दिखाकर एक बहुत बढ़िया काम किया।
एंड टाइम वाला दिखाने के वजह से द चांसेस ऑफ वो टेकिंग अप बढ़ जाता है। मगर मेरा जो प्रेजेंटेशन है ना वो एजेंट बनाने के लिए ही नहीं है, कोई भी अपॉर्चुनिटी को कैसा क्रिएट करना। आज सुबह हम लोग पूना में आ गए और मैं किसी को जानता नहीं था, रास्ते में पकड़ा एक आदमी से बात कर लिया, प्रोग्राम स्टार्ट होके आधा घंटा भी हुआ नहीं है, हमने एक प्रेजेंटेशन करके बात कर लिया। ऐसे अपॉर्चुनिटीज पूरे दिन में आप 20-20 लोग 30-30 लोगों को दिखा सकते हैं, एक महीने में 600 से 1000 लोगों को दिखा सकते हैं। 600 लोगों को आपने ऐसा अगर अपॉर्चुनिटी दिखाया, MDRT एजेंसी दिखाया, तो आप यकीन मान के चलिए कम से कम आपके पास 100 से 150 एजेंट बन जाए। So what I mean to say is we are losing great opportunity just because we are not showing them the agency. ऐसा कहते हुए हम लोग यहाँ से अभी ये किट को बंद करके इसको पकड़ लीजिए, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास चलते हैं। ये चलते चलते मैं कार में बात करूंगा आपके साथ, वो यहाँ से काफी 5-6 मिनट्स के डिस्टेंस पे है। वही अपना गाड़ी, चलिए राइट। आप में से कोई अगर मेरे से बात करना चाहते हैं देन यू कैन पॉसिबली टॉक टू मी। किरण, आपको या गिविंग मी कॉल, गिविंग हिम, ओके या। तो आप गाड़ी में बैठने के बाद भी हम बात कर सकते हैं, आप उस तरफ से आ जाओ, वो पहले सेंटर में बैठ जाने दीजिए। प्रकाश चंद्र शेट्टी है सर। फिर से बोलिए। प्रकाश चंद्र शेट्टी है सर। हाँ, प्रकाश चंद्र शेट्टी, हाउ आर यू सर? हाँ सर, एक्चुअली ग्रेट मॉर्निंग। या ग्रेट मॉर्निंग। ये बहुत अच्छा कॉन्वर्सेशन था सर, हर तरह से क्वेश्चन है उस तरह से आप सब वो जिस तरह से हैंडल किए है ना, वो एक नॉलेज तरह से हो सकता है। जब भी हमारा पास ये पूरा किट का नॉलेज होगा, इस तरह से पेश कर सकते हैं हम भी। राइट, बहुत अच्छा मैं ना, हाँ प्रकाश जी, थैंक यू सो मच। मैं आपके लिए राजेश टैगोर, और आप मतलब इंश्योरेंस इंडस्ट्री में आज मेरे को 23 साल हो गया, उससे पहले मैं टॉप का सेल्समैन था वगैरह वगैरह, आप जानते। मगर ये माधव साहब जो है, जो रास्ते में कोई मतलब नाश्ता कर रहे थे, उनसे जाकर बात की, उनको राजेश टैगोर वगैरह कुछ नहीं माना। राइट, हम गए उनके साथ बात की, और बात करते वक्त एक राजेश टैगोर है, एक LIC है और एक MDRT एजेंसी, तीनों ख्यालों को हमको पॉजिटिवली पेश करना है। और ये जो ब्रेक थ्रू होता है ना, वो पहला 1-2 सेकंड में होता है, पहला 1-2 मिनट के अंदर होता है। आप एक कन्वर्सेशन स्टार्ट कर पा रहे हो क्या, और उस कन्वर्सेशन में आप मीनिंगफुली आप उनको एंगेज कर पा रहे हो। एंड हर आदमी अपना एक अलग जोन में रहता है, कोई वर्क प्रेशर में रहता है, कोई डेडलाइन प्रेशर में रहता है, कोई जल्दी घर पे जाने का, किसी को बीवी ने डांटा हुआ है, किसी को बच्चों को पढ़ाई करवाने का है, किसी का गाड़ी का कुछ हो गया। सो एवरीवन इज इनटू डिफरेंट मूड्स ऑल टुगेदर। हम उसके लाइफ में क्या हुआ है बगैर जानते हुए एक अपॉर्चुनिटी सामने मौका मिलता है, पैदा करके अपॉर्चुनिटी पैदा करके उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। राइट, मेरा इस प्रोग्राम के जरिए आप सबको सिखाना यही है कि क्या आप लोग जाके मिल रहे हो, क्या आप लोग जाके बात कर रहे हो। तो एक है कि ऐसे बात करना है बोल के मैं क्लासरूम में बैठ के आपको लेक्चर दे सकता था। राइट, वो लेक्चर हो जाता था। तो हमने इस प्रोग्राम में लेक्चर भी दिया है, और आपको लेकर बात करने का हम लोग आपको अनुभव भी दिला रहे हैं। ट्रू सर। यस, एनी अदर क्वेश्चन एनीबॉडी वुड लाइक? हाँ, NFI सर गुड मॉर्निंग सर, अभिलाषा सर। ग्रेट मॉर्निंग, अभिलाषा बोलिए। सर यहाँ पर हम जब लोगों से मिल रहे हैं तो सर अभी मुझे 2 लोग ऐसे मिले जो बैंकर्स हैं और वो अपनी वाइफ के नाम से एजेंसी लेने को तैयार हो गए हैं सर। ओके, 1 मिनट, अभिलाषा से बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, सॉरी, वापस बोलिए अभिलाषा। बैंकर से मिले सर हाँ, 2 अलग अलग बैंकर से मिले हैं सर, अलग अलग लोकेशन पर, और वो दोनों ही अपनी वाइफ को एजेंसी लेने के लिए इंटरेस्टेड हो गए हैं सर। तो ये जो किट है सर, ये हम लोगों के लिए एक बहुत सपोर्टिव टूल है सर। उसके बाद का सुनाई नहीं दिया मेरे को सर वाइफ के नाम से एजेंसी लेने के लिए रेडी हो गए हैं, और एक्चुअली ये जो किट है, ये किट हमको बहुत सपोर्ट कर रहा है सर। अभी देखा आपने सारी चीजों को एक, यस सर, थैंक यू सर। सारी चीजों को आप कुछ बोल रहे थे अभिलाष, कंप्लीट करिए। सारी चीजों को ऐसा कुछ बोल रहे थे आप।
सर इसमें एक्चुअली क्या है, हर तरह के ऑब्जेक्शन को हम लोग हैंडल कर पाते हैं। इसमें सभी तरह के जो आपने टूल दिए हैं किट के अंदर, वो हर व्यक्ति के लिए बेस्ट सुटेबल हैं। वो हम लोगों को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैं फील्ड में मूवमेंट कर रही हूँ सर, और उसमें अलग अलग तरह के लोकेशंस राइट। पे अलग अलग तरह के लोगों से टच में आ रहे हैं, तो वहां पर ये किट हमको बहुत सपोर्ट कर रहा है सर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, जी सर। राइट। जी सर। अब जरा सा सब्जेक्ट में से बाहर आता हूँ। अभिलाषा, किरण नाटकर जी साहब सर। जिन्होंने जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ अपॉइंटमेंट लिया था, उनका अभी फोन आया था, तो हमें पहले से एक बार बताना जरूरी था कि देखिए ये लाइव हो रहा है प्रोग्राम, सो देयर विल बी कैमरा मैन वगैरह वगैरह। तो उन्होंने बोल रहे हैं कौन से चैनल में लाइव हो रहा है वगैरह वगैरह। तो आई रियली डोंट नो उनके पास जाने के बाद वो मानेंगे कि नहीं, तैयार होंगे। आई डोंट थिंक देयर वुड बी एनी ऑब्जेक्शन। उन्होंने अभी फोन पे बोला NFIFWI चैनल पे ये लाइव हो रहा है, तो वो एक ऑब्स्टेकल आ सकता है, मगर दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। हम लोग जाएंगे, उनको कोशिश करेंगे। अपॉइंटमेंट हो चुका है, इसीलिए इस इलाके में, दिस इज द एयरपोर्ट इलाका। लेफ्ट साइड अगर देखेंगे तो पूना का एयरपोर्ट है। ये जो है, अगर जरा सा दिखा सकते हैं तो उसका एयरपोर्ट का ही ये बाउंड्री है, बराबर है ना? हाँ जी। सामने एयरपोर्ट है पूना का, और यहाँ पर हम चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्या नाम है किरण चार्टर्ड अकाउंटेंट? श्रीकांत। मिस्टर श्रीकांत है, वो कुछ बंगलों में रहते हैं। आपको ये जो कॉल लगा, क्या बोलते हैं किरण, आपको कैसा महसूस हुआ? आइस ब्रेकिंग एक्सपीरियंस। राइट। First, he was not that much enthusiastic. Right. But you keep on in a very polite manner. Right. देखने में क्या जाता है? Right. देखने में क्या जाता है? Right. So, they need. तो उन्होंने देखो फर्स्ट टाइम इन्होंने he spoke about the potential. तो पोटेंशियल बोलते बोलते उनको मैंने नोटिस किया कि डोमिनेंट गाय है, वो अपना ख्याल को बहुत डोमिनेंटली पेश करते हैं, और वो जब डोमिनेंटली पेश करने की कोशिश करते हैं, हम एज अ डेवलपमेंट ऑफिसर उनको उनके बात को कंप्लीट करवाना जरूरी है। अगर मेरे पास आज डॉक्यूमेंट नहीं होता तो इस आदमी को मैं जीत ही नहीं पाता। अभी भी मैं लगता नहीं कि हम जीते हैं, जीत हार तो हुआ ही नहीं है, मगर वो पूरा हमको खा जाता। तो उन्होंने बोला कि इतना पोटेंशियल, इतना परसेंटेज, ये वो जो बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े स्टैटिस्टिक्स की बातें कर रहे हैं। तो अंडर दो सर्कमस्टेंसेस हमारे पास एक टेक्निकल एडवांटेज था कि 1995 का, 96 का, 2010-12 का, ये सब का डेटा हम उनको किताब में दिखाकर बात कर पाए। ELV के बारे में बात किया, इकोनॉमिक लाइफ वैल्यू, वहां पर MI into 200 लिखा था। उसके बाद उसका MI into 200 का एक्सप्लेनेशन जब दी, वो सब लिखा हुआ था। तो जब लिखित रहता है, इस प्रकार के टफ कस्टमर्स को हैंडल करना, मतलब वो सिर्फ जुबानी बात कर रहे हैं ना, आप दिखा के बात कर रहे हो, यू विल ऑलवेज हैव एन अपर हैंड। देयरफॉर वी मस्ट हैव, क्या बोलते हैं, द विजुअल एड्स, स्टैटिस्टिक्स, डेटा वगैरह वगैरह। यस, और कोई है जो बात करना चाहेंगे? एज इट इज हमको और 2-3 कितना मिनट लगेगा? 2-3 मिनट या 2 से 5 मिनट लगेगा वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को पहुंचते पहुंचते। यहाँ पर ना एयरपोर्ट है, और ये एयरपोर्ट के आसपास में मैं कॉल नहीं कर सकता था, क्योंकि कोई भी आदमी नहीं है यहाँ पर, स्टेशनरी कोई मिलेगा नहीं। तो वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर के बाद कोई एक जगह पर जहां पर हमको फिजिबल था, 8 बजे का अपॉइंटमेंट दिया, तो 7:30 से 8 बजे तक क्या करें, हमने वहां पर अपॉर्चुनिटी लिया, और उस अपॉर्चुनिटी में एक आदमी को हमने प्रेजेंट किया। राइट। और कोई है जो बात करना चाहेंगे, आप लोग के साथ डिस्कस करना चाहोगे? क्या सीख रहे हो आप लोग? और हाथ दिखाइए, बात करिए, चुप नहीं बैठने का। अभी भी 2 मिनट बाकी है। जैसे हम कस्टमर CA के घर पे पहुंच जाएंगे, मैं आपको म्यूट कर लूंगा, या आपको म्यूट करना पड़ेगा, तब तक वी कैन डिस्कस। हेलो सर। हाँ सर, हम लोग रूरल बेल्ट से बिलोंग करते हैं, और हाँ। जब हम कोट पहन के जाते हैं तो हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल इम्पैक्ट होता है उसका, और हमको बहुत रिस्पेक्ट भी मिलती है। क्या तो इम्पैक्ट ये होता है? इसकी वजह से। हेलो। बिल्कुल, हाँ जी, हेलो। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो हम लोग अभी तक देखे सर, हाँ। जब किट तो लेके जाते मेरे को हैं, सुनाई दे रहा है। जब हम कोट पहनते हैं सर, तो हमको बहुत रिजल्ट आता है उसका। और हम लोग रूरल बेल्ट से है तो बहुत चैलेंज भी आता है, बट बहुत इम्पैक्ट होता है जब कोट पहनते हैं और बिना कोट से जाते हैं सर। तो कोट आधा काम करता है, ऐसा लगता है तो कोट एक है, किट एक है। यस। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो।
तो यहाँ पर इस उसका प्रोग्राम में रिजल्ट आ मैं रहा बहुत सारा चीज ना बोल कर, हाँ जी बिल्कुल बोल के सिखा रहा हूँ, बहुत सारा चीज बगैर बोल के भी सिखा रहा हूँ। तो कोट एक पहनना चाहिए, किट एक लेना चाहिए। तो कोट पहनना एक स्टैंडर्ड है, किट लेके जाना दूसरा स्टैंडर्ड, ठीक से बोलना कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा। सिर्फ कोट पहनने से काफी नहीं, कोट पहन लिया मगर आपके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, जैसे रिक्रूटमेंट इफेक्टिव नहीं, हर आदमी को ऐसा नहीं कर पाए। मेरे पास पासपोर्ट नहीं होता तो मैं इस आदमी से बात नहीं कर सकता, मेरे पास किट नहीं होता था मैं बात नहीं कर सकता, मुझे बात करना नहीं आता तो भी मैं बात नहीं कर सकता था। मेरे पास तीनों चीज चाहिए, कोट भी होना चाहिए, किट भी होना चाहिए और बात करना आना चाहिए। ये तीन कॉम्बिनेशन है एजेंट रिक्रूटमेंट। और ज्यादातर डेवलपमेंट ऑफिसर ये तीनों को ना कहते, कोट पहनने को ना बोलते हैं, रिक्रूट उसमें नहीं हो रहा, उनका जॉब हाथ से जा रहा है। किट खरीदने के लिए, किट अपने पास रखने के लिए ना बोलते हैं, उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं रहता है। तो हजारों लाखों अपॉर्चुनिटीज जो पैदा कर सकते हैं वो पैदा नहीं करते। तीसरा, कोट भी है किट भी है तो अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, वो सब के सब भी बहुत जरूरी है, राइट। उसके बगैर यू विल नॉट बी। अभी हम लोग इलाके आ चुके हैं जहां पर वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हाँ जी सर, कौन है कैसा है हमको जरा भी आइडिया नहीं। कोशिश करेंगे, बात करेंगे, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। हम लोग जो है रिक्रूटमेंट के लिए, मैं 1.5 घंटा आपके सामने पेश कर रहा हूँ, ऐसा आपको पूरा दिन 8 घंटा 10 घंटा काम करना है, राइट है क्या? ओके, किरण लाटकर साहब जिनके पास लेके जा रहे हैं, आप बात करेंगे कि मैं बात करूंगा? किरण, मैं करूं? ये है क्या? ये आगे ये कंपोस्ट लिखा है वो, हाँ श्रीकांत द्वारकानाथ। ये जरा अभिषेक दिखा सकते हैं हम लोग को, वो छोड़ देना, ये पकड़ लो। अभी किरण मेरे को वो दे देना, मेरा वाला 2-3 जो है ये सब मेरा ही है, ठीक है। ये इसमें अंदर वो किताब भी है, नोटबुक, नोटबुक नोटबुक दे देना। इसमें नहीं है नोटबुक, इधर भूल के आ गए क्या? उस बैग में रख दिया क्या? आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट द नोटबुक, क्योंकि स्टार्टिंग में ही नोटबुक में उनके ड्रीम्स लिखना जरूरी है। तो ये जो मैं अभी ये कस्टमर के ऑफिस के अंदर जाने से पहले अब मैं जो चेक कर रहा हूँ, दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट एक्ट। आपको हर बार कस्टमर के यहाँ जाते वक्त वहीं पर भूल गए लगता है ना हम लोग, वो दुकान में हो सकता है भूल गए, नहीं है ना? वी मस्ट हैव मिसप्लेस्ड इट देयर। रिटर्न जाते वक्त हम लोग वहां पर देख लेंगे, राइट। तो कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, चलिए किरण, वो बैग तो खोला ही नहीं तो उसके अंदर हो ही नहीं सकता है। आपके पास कुछ नोटबुक है? दिखाइए। You want to stay here or come inside? Come inside. Shoes.
जूते उतारा। श्रीकांत जी नमस्कार, राजेश टैगोर, थैंक यू सो मच। He is Abhishek and we are live, so you know on YouTube. आप कुछ देखना चाह रहे थे YouTube में, आपको 1 मिनट दिख। अच्छा अच्छा अच्छा, that person. We already made one cold call. Okay. Cold call. Cold call means meeting an unknown person whom we don't know and talking to him on the streets, on the in a shop or somewhere. So someone was having breakfast over there. So we took chance and met him. Srikanji, thank you so much that you have made it, given us an appointment, and that too early in the morning. So it's an extremely important thing for us. So the agenda for today is, I would take a very small interview of 5-6 questions from you. I will write down. That is part 1. I want to be showing you this presentation called the MDIT Agency Information. This is called MDIT Agency Information. This is from LIC. So I will be showing you the benefits of MDIT Agency, and then we will have a discussion of 10-15 minutes about the possibilities of taking up agency. Shall I start? Yeah. I'm from Bombay, so Kiran would be the in charge, once the whole thing is through. आप बड़े handsome आदमी हैं. To start with, Mr. Srikanth. Yeah. Very knowledgeable. Srikanth पूरा नाम? Dwarkanath. DWARAKANATH. और कुछ है? Srikanth Dwarkanath. And today is 1st June 23. Now the time is 8:15. 8:20 a.m. And mobile number is something that we will not write because you already have it. So this would be a question, a survey kind of questionnaire about your dreams. So what do you do presently, Mr. Srikanth? You're a chartered accountant. Apart from chartered accountancy, do you do anything else? As a profession, yeah, I'm an insolvency professional. Okay. CA, insolvency. Can you just brief a minute about, half a minute about what would be the meaning of insolvency professionals? Who are the people who contact you, and at what stage? Insolvency professional is, there's the new act that is the insolvency, and so with respect to all the NPAs which the banks have accumulated. Non-performing assets. So the Insolvency Act came into force. It's a sort of resolution. Faster resolution process under a specific act called the Insolvency Act. Right. There's qualified people with so much amount of experience having passed a particular exam, right, are appointed as insolvency professionals. Right. So once you qualify to be an insolvency professional, say any company which has gone into bankruptcy, wants to get a way out of the entire loan burden and things like that. Yeah. So then an insolvency process is taken place by the court, by the National Company Law Tribunal, where a specific insolvency professional is appointed. He takes charge of the company, he or she, from the board of directors. These are the powers of the board of directors get suspended. Yeah. All of them rests with the insolvency professional. Right. So the insolvency professional then calls for, puts up a public advertisement. Yeah. He calls for people who are interested in taking over this company. Right. So if there are people who are interested in taking over these companies, then they come forward. Negotiations take place with the banks. So if a particular company, while getting established, if it costed around 10 crore rupees, by the time it gets into insolvency process, it definitely come down to 7-8 crores or 5-6 crores. That depends on a lot of factors, because the cost is on the asset. Yeah. That is the cost of the asset. Now the entire cost is not done by loans. So it could have taken only 2 or 3 crores of loan. This 7 crores could have been the owner's contribution. Yeah. So it's only the 2 or 3 crores that has gone into default. Right. So then you have to manage the cost of the asset and the amount of default and try to come up with a solution. So the existing management is unable to continue the business for whatever reasons. So the new management which comes in should have a viable option to
repay the loans that are outstanding, whatever extent possible. Still continue the operations to make it a viable proposition. This is a business call which anybody who comes in has to take. Wonderful. The process is driven by the insolvency professional because the board of directors are unseated from office. Right. So it is the insolvency professional who is in charge of the operations. Right. If the company is in operations, he's in charge of the operations. So everybody reports to him, not to the board of directors. Brilliant. If the if no such resolution comes into place, Yeah. if the offer is not acceptable to the banks, right. The person is offering only 50 lakh out of 2%. The bank says, no, we are not interested. Right. The company goes into liquidation. So then you start auctioning the assets. Whichever is, whatever is there. motivation. Yes. Every asset is getting not only mortgage. Yeah. The company goes into liquidation, which means the business. Every asset of the company would be liquidated. So you are the person who takes care of the entire process. Yes. We are appointed so nice by the court to report back to the court. So privileged. It's an independent, like a CA, it's an independent body. Yeah. No, we are privileged to be, sitting with you. And thanks for such a valuable information, insights actually. For me also, and for all our audience also, it is. Thank you so much, Srikanth. If I ask you the second question, we will get into dream specifics. What is your dream car? Mr. Srikanth's dream car. Dream car? Car. Honda City. Very small dream. I don't say that I want to drive a BMW. I'm very comfortable with the Honda City. 3 international vacations that you would like to travel with your family sometimes in future. Not very keen on international travel. I think we are comfortable traveling. But if you get an opportunity, which are the countries of your preference? Not such things, but maybe somewhere in Europe. Yeah. It's okay. Somebody who can give us good advice, we couldn't take advice. The US also, shall I write down? US. Mr. Srikanth Dwarkanath's dream home, where is it and how big is it? And what are the special things about Mr. Srikanth's dream home? Dream home? Where in the sense? Do you want to which area, which city, which village? Or some people have the dream homes in villages. Some people have dream homes in Pune or Bombay. We have a dream of building our dream home somewhere near Pune. Near Pune. And how big is that dream home in your mind? In terms of size? Yeah. 3,000 to 4,000. How much would it cost approximately? 1 crore rupees. 1 crore rupees. What is Mr. Srikanth Dwarkanath's dream monthly income? Itna kamayenge to you feel कि yes, this is, I'm happy. That satisfaction level. What figure would give you? Also satisfied. Yeah. 2.5 3 lakhs a month. And what is Mr. Srikanth Dwarkanath's dream monthly pension? Monthly pension? Yeah. So one day you're going to retire, and after that, there should be some income that should be coming to you regularly for the rest of your life. What is that ideal income or dream income? I don't think I have at any point of time thought about that. Sufficient income to keep our lifestyle. I have very no idea that I have not gone to that stage where I think I have quantified that amount of pension which I want. Actually, we had the discussion sometime, but I think it stopped. We have not taken it forward. Somewhere where we have to quantify that. So let us say if you quantify 2.5 lakhs to 3 lakhs is your present income. Same amount of money, keeping the lifestyle in mind. So I'm just finding 3 lakhs is the dream pension. Yeah. That's it. This is the first part of it. I'm speaking to Mr. Srikanth Dwarkanath on 1st of June 2023 at 8:20. He is a chartered accountant and he is an insolvency professional specialist. He takes care of all NPAs and gets into insolvency procedures. His dream car is Honda City, and he would, was reluctant, but finally he said US and UK. Europe are the places. If at all you get an opportunity, you would like to travel there. And he also said that Pune, near about somewhere in Pune, around 3,000 to 4,000 square foot,
1 crore rupee home is your dream home, and 2.5 to 3 lakh rupees is your dream monthly income, which you almost are already earning. And same 3 lakh rupees is the dream pension that you have. Am I understanding the correctly? Yes. So this is part 2. Now I'm coming to part 3. This is LIC's new agency that is coming up. It's called the MDRT agency, and I'm showing you the information. There are 64 benefits of MDRT agency. I'm going to show you the first 6. Okay, so MDRT is, by the way, $1 million round table. It's a USA-based organization which was built in 1923. Around 500 plus insurance companies worldwide are affiliated to it. So every company's top performers are called the MDRT agents, those who do minimum of $1 million business. So these people receive 6 benefits, and benefit number 1 is, this is benefit number 1. So MDRT agency gives you 12 lakh rupee first year commission, which means you start earning around 1 lakh from the first month only. So in LIC, there are 4 kinds of agents, to be specific. And there is a guy called normal agent who earns approximately 17,000 monthly and 2 lakhs annually. And then comes the MDRT agent. This is the first level, entry level. Here you earn minimum 1 lakh monthly and 12 lakhs annually. And similarly, COT is the next level, and the TOT is the guy who earns minimum 6 lakhs monthly and 72 lakhs annually. This is benefit number 2, Mr. Srikanth. Benefit number 1. Benefit number 2 is MDRT agents offers you chance to visit USA every year. So there is a convention that happens in USA, and one more global convention that happens anywhere in the world. So you can attend any one of them. So hence your dreams of traveling abroad becomes accomplished out here. So this is benefit number 2. At MDRT agency level, you can travel alone, and at TOT agency, you can travel with a spouse. So benefit number 1 and 2. Number 3 is MDRT agency offers you something called renewal commission. Now, this is a kind of pension. That's why the reason I asked you about pension. When do people receive pension in life? Absolutely. So they start their work around 25, 26. They retire in 60. So 58, 60. After that, they start receiving that. If it's a government job kind of a thing, they receive pension. But in MDRT agency, you start receiving this pension, which is called the renewal commission, from the second year only. Once you complete 1 year, your renewal starts, which is the pension. So this comes to around 15,000 monthly after 1 year. So pension after 1 year is 15,000. This you receive for the rest of the life. After 2 years, it automatically becomes minimum 30,000. And after 5 years, it becomes 75,000 rupees at MDRT level. And after 10 years, it becomes 1.5 lakhs minimum. So this is something that you're going to receive whether you work or not. So this is the pension. This is benefit number 3. Mr. Srikanth, benefit number 4 is MDRT agency gives you hereditary commission. Now, what is hereditary commission? Let us say you worked for only 10 years. That means you're eligible for more than 1.5 lakh rupees of monthly pension for life. This you are going to receive. After you, your spouse will receive. Okay. And after your spouse, your children would receive. And after your children, your nominee would receive. So this is something that you are going to receive for a lifetime. This is the 4th benefit. The 5th benefit is MDRT agency gives you, interest-free advance to purchase your dream car. So, and 6th benefit is it offers you an opportunity to purchase your dream home. So you can purchase your dream home in the second year. So 2025, you can purchase that 1 crore rupees dream home that you mentioned just about. So these are the first 6 primary benefits. So I would just summarize, 1 to 6 lakh rupees monthly income, USA travel or Europe travel every year, pension from the second year, which keeps on increasing. Hereditary pension, that means this income, whether you are there or not, your family receives car, home. How do you feel about the benefits? So, there are 3 important questions people ask me when I show this presentation. And I would like to, so the first question that people normally ask after seeing this is, yeah, I'm willing to take up agency, but what is going to be my job? So once you take up this agency, the question is, what is going to be the job? So the professional answer is there will be 4 phases in this agency. In the next 25, 30 years, if we define, there will be 4 stages. In every stage, the job would be different. Every phase, the job would be different. So first is called the initial success period, which is the first 18 months after taking up agency. During this period, your job is to show the lifestyle presentation to 10 people a day, 200 people a month. So this is going to be the job. So this is a
lifestyle presentations, Srikanth sir. This is an educational material, Mr. Srikanth, and this speaks about several kinds of lifestyle: royal lifestyle, comfort lifestyle, necessity lifestyle, bare existence lifestyle, poverty lifestyle, charity lifestyle. And, we all are in one of these lifestyles. And then it has a link about, you are the person who is pushing the family's lifestyle levels. And whether you are there or not, this lifestyle should continue to get maintained. So it takes you somewhere that insurance is the only thing that protects the lifestyle. And we, at the end of the time, we ask, which is the kind of lifestyle you would like to, decide today. Where do you want your family after you? Which lifestyle? So most people whom you show this presentation would end up saying, I want my family to be either in comfort level or at least bare minimum necessity, this kind of a lifestyle. When they commit to this, they say this, that means they are willing to purchase minimum 2 crore rupee insurance policy. This is what it is. Our job is to show this to 10 people a day, 200 people a month. And when you show this to 200 people a month, you end up receiving around 2 to 10 lakh rupees. So this is the opportunity. This is question number 1. Right? Am I clear? Then phase 2, the job would be little different, Mr. Srikanth. Phase 3, the job would be little more different. And phase 4, the job would be little further. Second question people ask, Mr. Srikanth, is, am I making it clear to you? Yeah. Whenever you feel like, you can interrupt and ask me questions. Is it actually practically, theoretically, easy or difficult to become successful in these areas? Is the second question people ask. And for that, we put the statistic forward. So today I'm here, I'm talking about 4 kinds of agency: normal, NDIT, COT, TOT, right? So normal, let us forget. NDIT, COT, TOT agency. So this is NDIT agency. This is NDIT, COT, TOT agent list of LIC. So I would just say that these are serial numbers of people who became NDIT, COT, TOT last year. So TOT, these are all the guys who are TOTs. Just look at it. If you can, serial number, agency code, the name of the person you can see. Can you read it? Yeah. And he has got a premium of how much? 6 crore 30 lakhs. And his commission was? Yeah. Plus there will be 40% bonus on that, like that. So all these guys are TOTs last year. So their names, their zones, their branches, and how much premium, how much commission is mentioned. And all these guys are NDITs who qualified last year. Mr. Srikanth, all these guys, right? Which means these are the guys who are earning more than 12 lakhs income. They are earning renewal pension. They are getting a hereditary pension. They are purchasing their dream car. They are in a position to make their dream home. All these guys, not 1 or 2, 10 or 20, 100 or 200, 1,000 or 2,000. You can see the list. The total comes to around 16,000. Yeah, 16,511 people qualified for NDIT agency last year. So this is 16,500 agents. And these are the top agents. So this is a guy called Bharat Parekh, who earns around, this is his annual income. Another guy called P. Srinivasan, he earns, yeah. Now this guy is, Rakesh Shetty. Something relevant to you. He was a chartered accountant, practicing chartered. He still is a practicing chartered accountant, tax planner, and his annual income is this. He's one of the top guys. And there are so many others indeed. So this is the second question people ask: is can I, become successful? If 16,500 people can become successful, you can also. Third question normally people ask is how to get started. So as a insolvency professional, I don't know whether you would be eligible or you would be willing to risk your just want to, can you give me that kit if you don't mind? There are several options to get started, Mr. Srikanth. This is in Hindi. Is it okay if I show you in Hindi? Do you want me to? So this is in English. So you can take agency
First option is your own name. So Mr. Srikanth can take, or spouse's name, or sibling name, or partner name. In any of these names, you can take up agency. How do you feel about the whole idea? The whole idea is, it is interesting. I will need time to, because these are things which are beyond our professional. This one. Right. So, this, just give me a proposal. Absolutely. As people with numbers, you always take a little time. I'm calculating, thinking, how does it work? Yeah, very CS are always considered to be more. Yeah, very conservative. intellectual, very intelligent, and very. There is a. Yes, I think this is a good idea. There is no doubt. It is required for financial inclusion also, as the country grows. There have to be alternate sources of security also for. In that sense, it's definitely a wonderful thing. As said, so many people come to us for advice. But as professionals, we also draw a line. We advise them and take a step back and say, we have advice now. Yeah. We take a call. We don't want. So what happens is, I don't know if it's okay if I'm saying yeah, it. please, no problem. Yeah. Sometimes we also would like to stay away from, trying to push our clients into a particular zone. Because there should not be even a thought of conflict of interest. Our independence is more paramount for us. Absolutely. If I go say he is my client and I keep telling him LIC policy, once, twice, okay, the third time he start thinking, why is he interested so much in LIC? Why is he not? Yeah, it gives a bad smell also. Yeah, Then, and if I put a board here that LIC policy, so people think, okay, this guy is probably an agent, so he is wanting you to buy an LIC policy. We don't want to even think about. We don't do that. I'm not saying we are doing that. We don't want to give an opportunity for our clients not to think like that. We are completely independent. We are professional. Our advice will be professional. It is a call which ultimately the client has to take or the customer has to take, whatever it was. So that independence we have been maintaining so far. I mean, not only in my level, we are a firm of 7 partners. We got 4 branches. We have been maintaining that independence. Not only in case of individuals, even corporate clients where we do a lot of advisory work. We have that Lakshman Rekha where we advise and then we step out and say, this or this. So that is something which has probably kept us aback from doing all of this. We are talking there is another side of the coin also. If the advice comes from a trustworthy person, knowledgeable person, this is for good for your family, this is good for your business, this is for your generation next. No, I think I feel that that's what I'm saying. No, Advising you, I will advise Kiran Latkar. Just said this is a good investment for you. This is a way in which you can manage your funds, manage your wealth. When you start accumulating wealth, I will do that. I have absolutely no problems in doing that. But if I tell you that you do it to LIC, you do it to this particular policy, other policies are not good. This is the best policy for you. So you don't want to get into that zone altogether. So it's he's talking about ethics and exactly. So we have been, when people talk about ethics and he's very passionate about his profession and respects his profession, these are the kind of statements that come out of. Yeah, I mean, I completely respect to you, and I'm honored that you allowed us to speak to you, and you saw the whole opportunity. But what I can suggest is, that people who are, he can't do it to a passenger. There is a restriction in insolvency. Then requires the approval. Bring it in spouse's name and all. It's not a very, very healthy thing. It's not transparency. Like, you don't do that. Instead, we can try to bring in people who are interested in doing that. Right. If so many people come, they want better sources and alternative sources of income. They don't want to restrict themselves to one source of income. Small businessmen who come to us for. You have children? Yeah, no. There are so many people who are trying to, especially the small businessmen who are earning in the 25-30 lakh zone, bracket, and who don't have the opportunity or the sources to multiply their income. Say if you're doing a turnover of say rupees a year, I'm just giving you and you want to, any businessman will have a dream to increase it to 10 crores, 10 crores, but then you have restrictions on raising working capital. You
have restrictions on, on space constraints. So where alternative sources of income probably can help you. This is one which we have always thought of. We have not gone so much into it. Our time constraints are there. So, किसी को बेटा करा advice कर रहा हूँ, time नहीं लगता. Then this I think may be a better opportunity for them. Under our professional guidance is always there. If he's not able to convince somebody, if you want somebody, if he wants us, he's able to identify somebody, but he wants us to help him. There, we always step in. I completely, when you speak about ethics, I completely support you, and I feel that that is the right approach. And I, salute to you for bringing that particular issue. I would say that. Thank you so much. Yeah, a couple of things that I would, as a part of the presentation, I would not put you into that bracket, but a couple of information that I would like to share with you, and then we will say that the presentation is complete. So it's a complete kit actually. This is a section that is specially built for professionals. One of the things that I feel is worth considering, Mr. Srikanth, is as a professionals, suddenly you reach 60 and, you're physically not in a position to do as much of active business as you are, and you're reaching 70 and the active business, volume comes down to almost 20%. By 75, 80, it comes down to 10%. And there is no steady income for professionals. So here is something that I wanted to show this to you. So insurance agency is a business, a blessing for all professionals, because it takes care during the good days as well as bad days. That's what it means. So professional and insurance, MDRT agents, when market is down, struggle for many insurance agents get continuous income. With medical emergencies, professional struggle for agency, and this is, we get continuous income. During vacation, professional struggle for and insurance agents get continuous income. During a pandemic, professional struggle for income, these people, agents, get continuous income. During off-season, professional struggle for income, and agents get continuous income. When you are, when you don't work for whatever reason, professional struggle for money, and agents get continuous income. After retirement, professional struggle for money, and this get continuous income. My idea is, with keeping your ethics, everything intact, and I would not like you to get into selling of insurance, educating people. We will be giving you educating tool. And this educating tool says that this is what is important. That's all. You will not tell them to buy. And by doing that also in an agency, in someone's name, I think you would be in a position to do a great job. Yeah, that's what I said. That is something which we have always spoken. Yeah. If my advice can help somebody take a good decision, we're always there for them. Yeah. So that, and to buy an LIC policy is... No, I'm not saying it that way. I would say that there are 4 levels at which people practice insurance sales. Can I just put it on paper in front of you? This is a very significant information, Srikanth sir. These are 4 levels. Okay. Level number 1 is called asking level. Mr. Srikanth, asking level means an advisor or an LIC agent, anybody goes and tells, "Yaar, Kiran, क्यों नहीं आप खरीद लेते हो? एक policy ले लो." They are asking, in other words, begging. This is the first level. I would say more than 80% people practice insurance sales at asking level. The second level is called telling level. Now, telling level means, देखो इसमें ये मिलता है, इतना पे return say you get this much and you get that benefits, etc. You tell them, and the customer is excited, and sometimes he purchases or sometimes he rejects. This is practiced by somewhere around 16%. Okay, so 96% जो है, ये 2 category में आ जाता है. The third level is called selling level. The selling level means, you sit with the prospect, ask them what is their interest, what is the need, उनके बच्चों के future के लिए, retirement के लिए क्या क्या है वगैरह वगैरह, and you present insurance as a solution to that particular.
But somewhere around 3.5% people practice insurance sales at these levels, and these people normally become MDRTs. And the fourth level is called educating level. Educating level means you are not at all selling, you are not at all asking, you are not at all telling people to buy insurance. You are educating people, why should you take up insurance? Which is a very, very pure subject by itself. This is the highest form of selling. Unfortunately, Srikant sir, only 0.5%, 5 out of 1,000 people practice insurance selling at this level, even less than that. What I'm telling you today is, when you take up MDRT or TOT agency, you are going to be practicing at this level. And when you are mentioning that I don't want to push or I don't want to influence, I don't want to sell somebody, you are talking about practicing at this level. So this is a very prestigious levels, and I think you should consider taking up agency at this level. I understand your point, but if I'm taking LIC agency, that means I'm only promoting LIC. No, you don't do that. You only educate. And by the end of educating, people will take up on their own. And you will not insist to take from me. आप जहाँ भी खरीद लो, ये आपके लिए important है. So you will have one more branch saying that your insolvency is one branch, tax planning is one branch, consultancy, chartered accounting is one branch, and advising or educating people about what is right for life is the fourth one. So you will only educate people. उसमें से कोई भी बोलता नहीं आप ही के पास सही तो you can do that, and with that you can become an additional TOT. आपको जो है वो after retirement का income ये बढ़िया तरीके से जनरेट कर सकता है. मैं आपको ना सिर्फ ये जो बात कर रहा था, this is just one educational tool. ऐसे वाले हमारे पास 28 educational tool है, और हर education जो इतना pure है, वो देखने के बाद आज तक मुझे क्यों किसी ने नहीं बताया. That is the kind of realization people have. So this applies to normal people, this applies to businessmen, this applies to millionaires, this applies to billionaires. You just to go and talk to a billionaire and say that this is what it is. अरे यार, आज तक मैंने ऐसे सोचा ही नहीं. So that's when you're educated. So in other words, I would say there is a concept called how, and there is a concept called why. Most people end up talking about how and what kind of insurance policy you should buy. You will be advocating people, why should you buy insurance? So that is educating. And why do most people don't do that? They are not educated. They are not being trained. Why is it that in case of in insurance companies, most of these companies, they have a particular syllabus. And that syllabus is a trap wherein you fall into these two categories. Very few agents go out of syllabus and take training and practice at this level. And at this level, hardly there are trainers who teach this. Unfortunately, Kiran Latkar is one of them from Pune who is affiliated to this group who are into educating. So he would be in a position to guide. we should give a serious thought? Yeah. So Kiran would follow up with you. Sure. Your final statement, you will give a serious thought is where we are ending up this conversation. Yes. Thank you so much for your time. Yes, it was very, very nice. Any question that you have in mind that you would like to ask me? Immediately not, maybe I can. This entire information kit is with him also. Whenever you feel like it, come and share that. Thank you so much. Yeah. I'm leaving with a feeling that I spoke to a very, very wise person, and it was very, very illuminating to spend time. Yes. Your information about insolvency. This is the first time somebody is coming with so much, because people come, so many people walk in our agency. Not only insurance agents, but all these finance companies also. Somebody wants a personal loan, please refer it to us, we give you reference commission. These are things which we keep meeting in our profession. Thank you. Our profession.
Yeah. You're saying this is the first time this is the first time when somebody came up with such a detailed proposal as to why this can be a something which professionals has to think about. Otherwise, it's only money, right? Some people will come and say, Bajaj insurance wala hai, right? He's more of a marketing person who comes and says, give me 4 policies, I go abroad. I am earning enough to go for trip abroad. Why should Bajaj make a sponsor? Yeah. Anyways, thank you so much. Yes, sir. Thank you. Bye-bye. Have a great day. Thank you, sir. That was Srikanth and chartered accountant. क्या बोलते हैं? Insolvency professional. अरे यार ये गिर गया मेरे पीछे, मैंने कवर नहीं किया था. Oh, accident के ऊपर accident. So that was Mr. Srikanth and yeah, it's already 8:51 now and we are coming out of Mr. Srikanth's home. Beautiful bungalow he has, right? कभी-कभी कुछ जेंटलमैन लोगों के साथ बात करते वक्त एक लेवल से ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है. एंड उनको मतलब आज जो बात किया, आज हाँ बोल के कल ना बोले, इससे अच्छा आज ना बोल के कल हाँ बोले. आज हाँ बोल के कल ना बोले, इससे अच्छा आज सोचता हूँ बोले और कल हाँ बोले. या तो मुझे ऐसा लगा कि हम लोगों ने अपने केस को बढ़िया स्ट्रांग तरीके से पिकअप किया, एक ख्याल को पेश किया. एंड यस, हम गाड़ी में बैठते हैं, यहाँ पर सामने एक दुकान है, कोशिश करें या बात करते हैं. चलिए, यहाँ पर दुकानदार भी नहीं है, तो वर्कर टाइप का आदमी है. आप अंदर आ सकते हैं. किरण, आप अंदर आ जाइए. यस, हम कर देंगे. अंदर बैठे कि बाहर ही रुके कुछ टाइम? ये आई थिंक बाहर ही बेहतर रहेगा. किट को अंदर रख देता हूँ. यस यस गाइस, आप में से किसी को कुछ पूछना है, बताना है, जताना है, सताना है, आप वो कर सकते हैं अभी. सर अनिल पाल बोल रहा हूँ. ब्रिलियंट ट्रांजिशन सर. हाँ, 3-4 लोगों ने अचानक बोलना स्टार्ट किया. मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ. श्रीकांत जी का बॉडी लैंग्वेज तो देखा सर. हाँ जी. एक्चुअली पहले उसका एक दिमाग में ये पड़ा है, वो मेरे को नहीं करता हूँ करके, एक साइकोलॉजिकली वो इज नॉट डू अदर बिजनेस. राइट. बट आपका बात प्रेजेंटेशन देखते उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होते देखा मैंने. राइट. इंटरेस्ट बहुत क्रिएट हो गया, बहुत रेस्पेक्टेबली सुना वो बहुत रेस्पेक्टेबली आपको आंसर भी दिया. राइट. उसका बॉडी लैंग्वेज से अभी मानना है उसका पीपल को एजुकेट करना पसंद आ गया हो. एब्सोल्युटली. हाँ, अब देखिए अचानक, अरे यार कितने लोग मेरे ऊपर भोग रहे हैं. अरे शुड भाई, हमारा ट्रेनिंग चल रहा है, देखता हूँ. ये पूरा इनका ना गैंग आ गया, यूनियन आ गया, बोलते हमारे इलाके में काय को घुसे. मैं सुन पा रहा हूँ, आप बात कर सकते हैं. मेरा जो ट्रेनिंग है ना बड़ा सिंपल है. क्या बोलते हैं, गीता में भी लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन. वही ना? हेलो, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन. इसका मतलब बोलते हैं काम करते जाओ, फल की चिंता मत करो. किसी का तो आप म्यूट करके रखिए, किसी का तो आवाज बड़ा अटक रहा है यहाँ पर. कोई तो म्यूट करके रखो, डबल आवाज आ रहा है. भाई लोग, सब लोग म्यूट करो. हाँ जी. तो मेरा जो मैसेज है बड़ा सिंपल है. क्या आप जाकर लोगों से मिल रहे हो?
दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। तो आपको मिलना चाहिए, मिलने के बाद कैसा मिलना चाहिए? सूट पहन के मिलना चाहिए। और क्या करना चाहिए? मटेरियल लेके बात करना चाहिए। सिर्फ जाकर वहां पर कागज पकड़कर आप एजेंट बन जाओ बोलने का नहीं। लास्ट में हम आते वक्त श्रीकांत ने कंपेयर किया हमको किसके साथ? जो आते हैं ऐसे पूछते आई विल ऐड सम इनकम टू योर इनकम। राइट, वो बजाज अलायंस वाला कोई एक आया था और वो आके समझा के गया। राइट, तो अब समझो आज के बाद और कोई एक आदमी आया तो उसको बात करेंगे। बजाज वाले के बारे में हमारे साथ श्रीकांत ने किस तरीके से बात किया और हमारे बारे में दूसरों के साथ कैसे बात करें, वो फर्क जो है हमारा प्रेजेंटेशन वहां पर बनाता है। हम जब लोगों को मिलते हैं और आइडिया को शेयर करते हैं, रिस्पेक्टफुली शेयर करना चाहिए। राइट, आप अगर देखेंगे एक श्रीकांत है और उसके पहले माधव है, दोनों कंप्लीटली अलग अलग पर्सनालिटीज थे। माधव जो है वो अपना स्टैटिस्टिक हर एक चीज में वो फॉल्ट पकड़ने को, ये बताने को, वो बताने को कोशिश कर रहा था। मेंटली वो एक अलग जोन में था और मेरे को सुन के मेहरबानी कर रहा था, वो वाला चीज जो है हर प्रकार से माधव। बट माधव इज ए वेरी वो एक बहुत ही पावरफुल आदमी भी थे। वो अगर एजेंट्स के लिए मान जाएंगे तो ही कैन बिकम ए ग्रेट ब्लेसिंग, क्योंकि वो हर आदमी के साथ डोमिनेंटली एंड टेक्निकली इंफॉर्मेशन वाइज बात कर सकते हैं। सो दैट इज माधव। माधव के एग्जैक्टली ऑपोजिट है श्रीकांत। श्रीकांत इज वेरी इंटेलिजेंट एंड सुबह उठकर यहाँ पर आकर बैठे हैं, हमारे लिए इंतजार कर रहे हैं। मगर श्रीकांत जो है हाथ ऐसे पकड़ के हर चीज को सुनकर, हर चीज को समझकर वो बात कर रहे हैं। सो एवरी पर्सन इज डिफरेंट, एवरी पर्सनालिटी इज डिफरेंट, और हम लोगों का प्रेजेंटेशन उनके हिसाब से बदलते रहना चाहिए। यहाँ पर ना रास्ते में गाड़ियां बहुत ज्यादा है और साथ में क्या बोलते हैं, वो रास्ते में जाने से कुत्ते भौंक रहे हैं। तो दीज आर डिफरेंट चैलेंजेस दैट वी हैव। यस, गाड़ी में ही बैठ जाते हैं, बाकी जो है बाकी टाइम गाड़ी से ही स्टार्ट कर लेते हैं। चलिए गाड़ी में। दिस इज बिकमिंग, हाँ बोलिए मकसूद। सर आपने कल एक चीज सिखाया, बड़ा अच्छा था। लाइक वी हैव टू आस्क आपको कैसा महसूस होता है। राइट, तो लाइक थिंकिंग नेगेटिवली एंड फीलिंग पॉजिटिवली आपने कहा, तो उसी में से एक मैं पूछना चाहूंगा, आपको कैसा लगा? इज इट लाइक गोज इन अ थिंकिंग मोड? या कैसा लगा? इट गोज इन थिंकिंग मोड, नॉट इन द फीलिंग मोड। ओके, और डिफरेंट बिटवीन ईएलवी एंड एचएलवी। जैसे ईएलवी की बात करो तो अभी का जो प्रेजेंट जो उसकी अर्निंग है उसका ही मैं बताता है, इतना इतना ये ऐसा होना चाहिए। तो ईएलवी किसके लिए यूज करना है और एचएलवी किसके लिए यूज करना है सर? मैं एचएलवी का पढ़ाई नहीं करवाता हूँ, हम लोग सिर्फ ईएलवी का ही पढ़ाई करवाते हैं। तो ईएलवी इंश्योरेंस के लिए यूज किया जाता है, इंश्योरेंस समझाने के लिए। अच्छा, जिस तरह हम लोग यहाँ पर इंश्योरेंस रिक्रूटमेंट की चैलेंजेस बात करेंगे। ये सब के अंदर ना मेरे ये प्रोग्राम के कंटेंट नहीं है ये मकसूद। अच्छा, एक और सब्जेक्ट में से बाहर जा रहा है। या अगला एक और चीज, जिस तरह हमने सीखा था एजेंट में, मतलब लाइक बिजनेस एजेंसी के बिजनेस में स्पिन वी हैव टू यूज। तो क्या हम अरे यार, जो चीज हम लोग ये प्रोग्राम में बात नहीं किए हैं वो अगर आप सवाल यहाँ पर पूछोगे तो दैट बिकम्स वेरी वेरी इररिलेवेंट एंड डिसरेस्पेक्टफुल फॉर ऑल अदर पार्टिसिपेंट्स। आप स्पिन जिस प्रोग्राम में सीखे हैं वहीं पर पूछिए। ठीक है, यस, थैंक यू। और कौन है अगला क्वेश्चन? यस, हाथ दिखाइए, हम लोग बात कर सकते हैं, अनम्यूट कर सकते हैं। मैं रास्ते में अभी जा रहा हूँ। वी आर ट्राइंग टू राजकुमार जी एंड और कौन है? राजकुमार जी को अनम्यूट कर सकते हैं। सर ग्रेट मॉर्निंग। हितेश वोरज, ग्रेट मॉर्निंग। सर प्रेजेंटिंग टू चार्टेड अकाउंटेंट एक को मैंने प्रेजेंट किया था सर, बट अनफॉर्चुनेटली उसने नहीं लिया। वो उनके एक असिस्टेंट को अगर हम इंश्योरेंस एजेंसी की बात करें, बिकॉज दे एडवाइस फॉर इन्वेस्टमेंट्स, वाज इट द राइट वे सर? सी सर कुछ नेटवर्क इशू हुआ सर। राइट वे रॉन्ग, दैट इज आल्सो ब्रिलियंट आइडिया, ऐसा मैं बोलूंगा। मगर मेरा एक मतलब क्या बोलते हैं, आज मैं आपके साथ ट्रेनिंग करते वक्त, बात करते वक्त एक लेसन आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इजाजत दो मेरे को थम्स अप करके। अरे सब लोग थम्स अप करके इजाजत दो ना भाई लोग।
एक लेसन शेयर करना चाहता सर 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 हूँ। हम सब इसको दिखाओ ना सर एक्चुअली नेटवर्क का कुछ इशू है सर। के आसपास में नेट जैम हो रहा है। इट्स ओके। हाँ, वापस सब लोग आए हैं, मेरे को थम्स अप दिखा सकते हैं तो हेलो। हाँ, थैंक यू। तो मैं यहाँ बताना चाहता हूँ आज का जो फाइनल लेसन प्रोग्राम था कि मैं किसी के सामने जाते वक्त और बात करते वक्त दिमाग में कैसे भी करके एजेंट बनाना है, इस माइंडसेट के साथ आदमी के पास नहीं जाता। आप सबको समझ में आया तो जरा थम्स अप करें। कैसे भी करके इसको एजेंट बनाना है इज ए माइंडसेट। मैं बोलूंगा करके 25 लोगों को किताब दिखाऊंगा, ये माइंडसेट पे आना चाहिए। करके 25 लोगों को किताब दिखाऊंगा, एक माइंडसेट है। और दूसरा माइंडसेट है कैसे भी करके मैं आज ये चार्टर्ड अकाउंटेंट को एजेंट बना दूं, या वो माधव को एजेंट बना दूं, या जिस किसी को मिलते उसको एजेंट बना दूं। ये एक माइंडसेट है। ये दोनों में से आपके पास माइंडसेट होना चाहिए। कैसे भी करके ये प्रेजेंटेशन में आज 20 लोगों को दिखाऊंगा, 25 लोगों को दिखाऊंगा वाला माइंडसेट। जिस दिन आप वो माइंडसेट एस्टैब्लिश कर लिया, गैदर कर लिया, डेवलप कर लिया, आप सक्सेस के रास्ते में। समझ में आ रहा है तो जरा थम्स अप करेंगे भाई लोग। यस सर। या थैंक यू सो मच। 9 बज गए, इट्स ऑलरेडी 9 o'clock एंड हमको यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। बाय बाय फ्रॉम पूना एंड क्या बोलते हैं किरण लाटकर साहब। यस, किरण लाटकर साहब की तरफ से भी बाय बाय। अभिषेक की तरफ से, हम सब की तरफ से बाय। सी यू वेरी टुमारो। आज आइए, काम करिए, मत भूलिए डेली 25 लोग।